Good evening, everyone. Can you hear me? Am I audible? So, dear friends, so when we see the tongue of any patient, and if there is a central crack in the tongue, so what is the meaning of that? अगर जीभ के सेंट्रल में क्रैक है तो इसका क्या अर्थ है? लेट्स सी दिस टंग एंड टेल मी. इस जीभ को देखिए. लुक एट द टंग नंबर 4. Tongue number 4. What is the meaning of this central crack? So the meaning of this central crack is there is a problem in the stomach. कि stomach में problem है. Because if we divide the tongue into different parts, so the tongue can be divided in 3 parts first. This is the upper body, this is the middle body, and this is the lower body. Tongue को हम 3 भाग में बांट सकते हैं. And if we talk about the middle body, the central is stomach, and all around is spleen. All around is spleen. तो सेंट्रल तो स्टमक है और चारों तरफ स्प्लीन है. काम नहीं करता. So the central crack here means there is a heat in the stomach or some problem in the stomach. Maybe heat, may not be heat, but some problem in the stomach. अगर जीभ के सेंट्रल में क्रैक है, but this crack is coming on the tip of the tongue. If this crack is reaching to the tip of the tongue, now it become hard crack. So suppose this crack is coming till the tip of the tongue, then we are telling it hard crack. तो अगर किसी पेशेंट की जीभ में क्रैक है लेकिन वो क्रैक टिप तक आ रहा है, like we can see this bump, you can see this bump. आप यहां पर एक बंप देख सकते हैं. If this bump is here on the tip of the tongue, means this bump in the heart. If this bump in the heart, then means heart is having some blockage. Bump is telling about the blockage. So look at this tongue. If you look at this tongue, in the 4th number tongue, in this tongue, you can see the very slight crack here. ये बहुत ही slight crack है. But this become prominent as it proceed further. And we can see very little bump on the tip of the tongue. हम छोटा सा bump देख सकते हैं tip of the tongue पर. So what is the meaning of this bump? इस आखिर bump का मतलब क्या है? So many times we have seen a very bigger bump on the tip of the tongue. कभी कभी हमें जीभ के टिप पर बहुत ही बड़े बम्प दिखाई देते हैं. So the meaning of bump, now the kids are suffering with the mental retardation, the bump on the tip of the tongue. So look at here in this tongue. Now you can see there is a bump on the tip of the tongue. Okay, so this is bump like a boil is on the heart area. ये हमारे heart area में.
तो जब हम हार्ट की बात करते हैं, फ्लेम प्लस फायर माइट हरेस द हार्ट, कि फ्लेम और फायर हार्ट को हरेसमेंट कर सकती है, कफ और अग्नि दोनों मिलकर हार्ट का हरेसमेंट कर सकती है। एंड ओनली फ्लेम ऑल्सो do the harassment of the heart or the mind. Heart means mind. So there are two conditions. The condition number one, flame plus fire. Condition number two, only the flame. दो कंडीशन है, पहली में फ्लेम और फायर है और दूसरे में सिर्फ फ्लेम है. There are two conditions. So yesterday we were talking about the condition number one. कल हम पहली कंडीशन की बात कर रहे थे. When there is a flame and fire in the heart, it is harassing the heart. जब flame fire दोनों हार्ट में होते हैं. So we can see the yellow coating on the tongue. Yellow color is the color of heat. Yellow color का मतलब है color of heat. So there is a flame fire harassing the heart. Then heart means mind. Heart का मतलब है मन. Then person will be having mental restless, palpitation, not able to sleep, even might suffer with the speaking difficulty or aphasia. Person might go in the coma and get started. तो व्यक्ति को नींद नहीं आएगी, छाती में धड़कनें बढ़ जाएंगी. व्यक्ति कोमा में हो तो यही ट्रीटमेंट करेंगे, चौंकने की प्रवृत्ति होगी, ये सब होगा. और दिस हैज बीन डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, यिन टाइप एंड द यांग टाइप. So we have seen yin type means dullness and talking to himself, like the schizophrenia patient, कि व्यक्ति खुद से बातें करता है, वो yin type. So schizophrenia means flame fire harassing the heart. On the other side, person will become very aggressive, shouting, laughing, speaking loudly, very, very aggressive, and always ready for quarrel. ये दूसरा व्यक्ति एग्रेसिव होगा. तो ये हम कल समझ चुके हैं. So we already have understood yesterday there are two patterns when flame fire harassing the heart. One is the yin pattern, second is the yang pattern. One is the patient silent, another patient is aggressive. तो ये पैटर्न हम समझ चुके हैं कि इसमें जब फ्लेम फायर हमारे हार्ट को हरेस करेगा तो व्यक्ति को नींद नहीं आएगी, और एक यिन पैटर्न हो सकता है और एक यांग पैटर्न हो सकता है. One is silent pattern, another is aggressive pattern. Now let's talk about the flame misting the mind. Only the flame. जब हमारे हृदय के ऊपर फ्लेम जम जाता है तो जैसे बादल होने पर आकाश नहीं दिखता, वैसे हृदय पर जब फ्लेम जमता है तो क्लियर परसेप्शन नहीं होता. सो पर्सन नॉट हैविंग क्लियर परसेप्शन व्हेन देयर इज अ फ्लेम ओवर द हार्ट. All the mental retarded kids might come in this pattern. Mental retarded kids. What is the meaning of mental retardation? Because they are not having clear perception. उनको clear perception नहीं. So mental retarded kids are coming in this pattern. That's why if you see the mental retarded kids, they are having some kapha in the throat, the rattling sound from the throat, and because of the kapha, when they are doing they are rattling from the throat, उनके गले में से कफ की खरखराहट की आवाज आती है. And they might suffer with the aphasia और स्पीकिंग डिफिकल्टी. उनको या तो एफेजिया हो सकता है या बोलने में तकलीफें हो सकती है. एंड
When there is a more kapha, it will create drowsiness. So these kids are sleeping a lot. ये बच्चे बहुत ज्यादा सो सकते हैं. These, or they are not exactly sleeping, they are just in the drowsiness. They are not alert because kapha is creating drowsiness, just opposite of alertness. तो सबसे पहले आपको इनका कफ निकालना होगा. First you have to expel the kapha of these kids. So when we see the kids, when we see the tongue, जब हम जीभ देखते हैं, so the first person having central crack which is reaching on the tongue, tip of the tongue, पहले लोगों में जब फ्लेम फायर दोनों होती है, जीभ में के सेंट्रल में क्रैक होता है जो टिप तक जाता है. टिप तक जाता है मतलब हार्ट फायर है. But there is also yellow coating. Yellow coating means phlegm or dampness. The meaning of yellow coating, the phlegm or dampness. तो पहले जो लोग होते हैं, अगर फ्लेम फायर दोनों, जैसे कि हमने समझा ये सीजोफ्रेनिया पैटर्न है, दिस इज द सीजोफ्रेनिक पैटर्न. इसमें फ्लेम फायर दोनों होगी. And the second pattern, there will be central crack and there will be bump on the heart area. Heart area में bump होगा, right? It means the flame misting the mind. और कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा कि इसके टिप ऑफ द टंग में बम्प बना हुआ है, लेकिन व्यक्ति तो नॉर्मल है, मेंटल रिटार्डेड नहीं है. कि बम्प बना हुआ है लेकिन मेंटल रिटार्डेड नहीं है, इसका मतलब है कि भले ही मेंटल रिटार्डेड नहीं है लेकिन उसका मन उलझन में है. उलझन, उसे उसके अंदर ऐसी उलझन है कि उसे पता नहीं कि कैसे निकला जाए. द पर्सन इज हैविंग person is mentally stuck. Like suppose one married female is having lots of problems, maybe for 1 year, 2 year, 5 year, 10 year, but still she doesn't know what to do. No option. So she is mentally stuck. I have one of my patient. She is having everyday quarrel with the husband. हर दिन उसका अपने husband से झगड़ा होता है. Husband is very aggressive. And when the lady talk to her parents, जब वो लेडी अपने माता पिता से बात करती है तो माता पिता बोलते हैं बेटा एडजस्ट करना पड़ेगा, you should adjust. She doesn't know what to do. She just adjusting. Since 10 years she is adjusting. If he asks anyone what to do, shall I got separated? No. Please adjust. Keep on adjusting. So she is highly mental stuck. She doesn't know what to do. कोई रास्ता ही नहीं है निकलने का. Then when I saw the tongue, there is a big bump on the tip of the tongue. She is not mentally retarded, but there is a very big clouds on the heart. भले ही mentally retarded नहीं है, लेकिन हार्ट में एक बड़ा क्लाउड है. समझ में नहीं आ रहा क्या करें. So sometime when we see the kids, like yesterday we have seen one kid, one 16 years female yesterday in the group itself. If you remember, अगर आपको ध्यान हो, she was doing rattling sound from the throat, कफा. उसे गले में से कफ की आवाज आ रही, खरखराहट.
So because the flame is misting the mind, or flame is misting the heart. So we have to treat the mental retarded kids as well as normal person who is having, who doesn't know what to do. Suppose someone is having quarrel in the home and suddenly feel the heaviness in the heart. That is, flame is misting the heart. अगर आपका किसी से झगड़ा हो गया और हार्ट में हैवीनेस आ गई, समझ में नहीं आ रहा कि कुछ खाया पिया नहीं, तो भी हार्ट में हैवीनेस आ गई, वो जो हैवीनेस है वो फ्लेम है जो आपके हार्ट को भ्रमित कर रहा है. इसे सामान्य भाषा में बोलेंगे कि फ्लेम द्वारा भ्रमित किया गया मन. तो आप देखो झगड़ा होता है तो लगता है यार, then you are not feeling good enough. I told you, heart is the place of sand. Heart should be empty. हार्ट को हमेशा खाली रहना चाहिए. लेकिन अगर झगड़ा हुआ, हार्ट में फ्लेम आ गया, अब हार्ट इज नॉट एम्प्टी, हार्ट इज ऑक्युपाइड बाय द फ्लेम. Now if you speak with the person, tell me, there are two persons. One person is in the very happy mood, one person having some quarrel, and because of the quarrel having some heaviness. So there will be difference or not? If you tell them, okay, speak for 20 minutes, whether there will be difference or not? अगर कोई व्यक्ति के हृदय में भारीपन है और वही व्यक्ति जब एकदम खुश है और उसे बोलने के लिए कहो कि 20 मिनट चलो एक लेक्चर लो, तो दोनों में अंतर होगा कि नहीं होगा? पर्सन वही, अंतर होगा कि नहीं होगा? होगा. बिकॉज फ्लेम इज मिस्टिंग द हार्ट, फ्लेम इज मिस्टिंग द माइंड. So Master Tung used to do this treatment for many females. Master Tung used to put only single point, that is SI1 on the opposite side, small intestine 1 on the opposite side. Because heart is the left side, so Master Tung used to put small intestine 1 on the right side. As per the Master Tung, small intestine 1 is the very good point and it will expel the flame out. So some person is having heaviness here. You put the SI1 on the right side. This is the SI1. Immediately it will dissolve the flame. Okay. As per the Master Tung, the reaction area of the SI1 is heart. मास्टर टूंग के अनुसार जो SI1 है वो हार्ट का ही पॉइंट है. घुटने का दर्द तो SI1, हार्ट का पेन तो SI1, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कारण होने वाला घुटने का दर्द तो SI1. बिकॉज एज पर द मास्टर टूंग, if you want to treat the knee, treat the heart. घुटने का इलाज करना है तो घुटने को भूल जाओ, हार्ट का इलाज करो, घुटना ठीक हो जाएगा. एज पर द मास्टर टूंग. So in this way, this is the master tool. But as per the TCM, let's see what to do. So when flame is misting the mind, there will be bump on the tip of the tongue. Let's see here. So when flame fire is harassing the heart, means flame and fire both together harassing the heart. This is the condition number 1. And only the flame is misting the mind. That is the condition number 2. ये दो conditions. So the condition number 1
because of the more fire and phlegm और कफा in the heart. पहली कंडीशन में फायर के साथ साथ कफ है. And the second condition, kapha is blocking the heart orifices. कफ के द्वारा यानी फ्लेम के द्वारा हार्ट को ब्लॉक किया जा रहा है. So the when the patient is in the coma, अगर कोई पेशेंट कोमा में हो, so you have to treat flame as well as the fire. कोमा वाले पेशेंट्स का हम फ्लेम फायर दोनों ठीक करते हैं. Even the patient of schizophrenia, for the patient of schizophrenia also we treat flame and fire. But mental retarded kids we treat here. हम mental retarded kids का इलाज इधर करते हैं. Only the flame misting the mind. And even after the paralysis, post paralysis we do the treatment of flame misting the mind. हमने आप में से किसी ने कई लोगों ने पैरालिसिस के पेशेंट देखे होंगे. जब पैरालिसिस का पेशेंट बिस्तर पे पड़ा रहता है तो उसे काफी कफ हो जाता है. वो जब अगर ट्यूब से खाता है. Have you seen this? Have you seen the patient who is suffering with the paralysis having lots of kapha? I have seen many patients like the half body paralysis, they are bedridden, and when I visited, they are having paralysis. The main concern is paralysis, but also they are having kapha. And I always focus on kapha first. तो जब कोई व्यक्ति को पैरालिसिस होता है तो बिस्तर पर लेटा रहता है, हलचलें बंद हो जाती हैं, खाना पीना खाता रहता है, दूध पीता है, प्रोटीन खाता है, उसके अंदर कफ बढ़ जाता है. Because if we are not doing exercise, we are not walking, we are not doing any movement, then definitely there will be more kapha. Yeah. So whenever patient is bedridden, there are more chances of having kapha. तो जब भी हम mental retarded kids का इलाज करना चाहते हैं, so when we want to treat the mental retarded kids, or when we want to treat the patient of post paralytic or brain stroke, हम फ्लेम मिस्टिंग द माइंड का ट्रीटमेंट करते हैं कि भाई फ्लेम ने माइंड को मिस्ट कर दिया है, इसका इलाज करो. फ्लेम ने हमारे हृदय के ऊपर आवरण बना लिया है. On the other side, when we are doing the patient who is in the coma or the patient who is suffering with the schizophrenia, अगर हम कोमा में गए पेशेंट का, schizophrenia के पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं तो हम फ्लेम फायर का इलाज करते हैं. Why the flame fire is more? There is a one cause. Person is eating hot, spicy, and the greasy food. अगर व्यक्ति ज्यादा मिर्च मसाला तीखा और कफ बढ़ाने वाला खाना खाता है तो बहुत चांसेस हैं फ्लेम फायर बढ़ने के. On the other side, this person is eating lots of cold and greasy food. ये व्यक्ति बहुत ज्यादा कोल्ड और ठंडा और ग्रीसी फूड खाता है. So this is the difference. Always remember, this is the difference, right? So let's see this. So when you want to treat the flame misting the mind, जब आप flame misting the mind को इलाज करते हो, so we start from here. First we are doing the balancing of the heart. Then we are doing the balancing of the pericardium. Just while doing the tapping, हम टैपिंग करके हार्ट और पेरिकार्डियम को बैलेंस करते हैं. We are balancing the heart and pericardium. Right? We have already seen the right GB22,
the right UV1, then the left UV1, then the left GB22. ये हमने समझा था, ये 4 बिंदु हैं हार्ट को बैलेंस करने के लिए. They are the 4 points to balance the heart. And the 4 points to balance the pericardium, right GB22, right triple Barmer 16, left triple Barmer 16, and the left GB22. They are the point of divergent channel. Just we do the tapping on every point for minimum for 30 seconds to 1 minute. तो 4 बिंदुओं से हम हार्ट को बैलेंस करते हैं और 4 बिंदुओं से हम पेरिकार्डियम को बैलेंस करते हैं. So suppose you want to do the treatment of mental retarded kids. Like yesterday we have seen beautiful kid, girl, 16 years. If we want to do the treatment for her, first we'll balance the heart, then we'll balance the pericardium. पहले हम हार्ट को बैलेंस करेंगे, फिर हम पेरिकार्डियम को बैलेंस करेंगे. So we will start the treatment from the balancing of the heart. So we'll start doing tapping on the right side. This is the right side. This is the right side. Sorry. This is the right side. Okay. So we start doing the tapping here from the axilla. If we go 3 tune down, so this is the gallbladder 22. Do the tapping here. Make the fist like this. Do the tapping. "30 seconds to 1 minute. 1 minute is a good time. I am balancing my heart. Even I need to balance my heart. You need to balance your heart. Everyone needs to balance their heart. Now coming to the UV1. Actually, UV1 very inside, very deeper inside. So we can just do the press and release for 1 minute. हमारी आंखों में जहां कीचड़ निकलता है वही UV1 है. That is the bladder 1, where we can see the eye dirt is coming out from here, from the corner of eye. That is UV1. So just do the pressure. This is also very good murmur point. इसका हम 1 मिनट तक स्टिमुलेशन करते हैं, 30 seconds to 1 minute. Now right side is over. Now doing the left side. All of you will definitely feel very good relaxation after finishing this treatment. Now we are doing the left gallbladder 22 from the axilla, going 3 tune down. This is the treatment of heart. So if you want to ask me, okay, tell me the treatment of heart, over. Treatment of heart is over. We can also add 3 more points: CB17, CB12, and SI7. I will add you shortly. CB17 between the nipples, CB12 the alarm point of the stomach, and SI7 Leo point of small intestine. Then heart treatment is complete, over. अगर आपसे कोई फोन करके बोले यार हार्ट का कुछ इलाज बताओ, बता देना, यही हार्ट का इलाज है. 4 + 3 point. Easy or not? Can you do or not? And even can you suggest or not on the call? If someone asks you, yes, you can suggest. It's a very easy but very effective. It will remove the blockage from the heart. Let's go for the pericardium. चलो पेरिकार्डियम की बात कर लेते हैं.
because pericardium also supplying the heart as well as the brain. So let's start for pericardium. So this is the right side. Okay, that last 3 point I will tell after finishing the pericardium. That is in the sequence line. So from the axilla, going 3 chun down, gallbladder 22, doing the tapping for 1 minute with the intention to balance the pericardium. अब मेरा intention है कि मुझे pericardium को balance करना है. (30 seconds to 1 minute now. Right side triple warmer 60. So this is the SCM muscle. ये हमारी SCM muscle है. This is the SCM muscle. Sternocleidomastoid muscle. इसके पीछे है ट्रिपल वार्मर 16. ट्रिपल वार्मर 16 is the window of sky point, means it is the window of heaven. It is connected with the heaven. ये ऊपर से connected है. Window of sky point. So this point on the back side of this SCM muscle at the level of this mandible, angle of mandible. Got it. हमारी ये जो जबड़ा है, ये जबड़े का जो एंगल है यहाँ के पीछे है. This is a triple warmer 16. Gently press. This point is very painful. Press and release. Do the gentle press. Or even can do the tapping. If you are reaching on the exact point, do the tapping. Do the very gentle tapping. Don't put much pressure. ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है क्योंकि यहां से हमारी कैरोटिड आर्टरी जाती है. Or even you can do the gentle pressure like this. So right side is over. It will be painful. Now coming to the left side. So this is the SCM muscle. ये हमारी SCM muscle है. इसके पीछे at the level of mandible. At the level of this angle of mandible. Press and release. 30 seconds to 1 minute is over. Now coming to the left gallbladder 22 from the axilla 3 chun down. So this is the completion of the pericardium treatment. हमने ये समझो कि हार्ट और पेरिकार्डियम की पाइप में हवा फूंक दी. It will remove the blockage. It will remove the stagnation. It will remove the phlegm. It will remove all unwanted depositions. So this was the completion of balancing of the heart and the balancing of the pericardium. So let's see here. Many person was telling me that they are finding divergent channel is little difficult. Then I thought I will take a special session on the divergent channel. Okay, so everyone will be very clear because divergent channel are super easy. But it look like difficult because we don't know right now. Once you know, they will be more and more easy. So I will shortly take the detailed classes in this batch only for on the divergent channel. So now we will discuss everything about the divergent channel. Okay, we will when to use, how to make the protocol using divergent channel, everything we'll discuss. तो हमने ये कर लिया, हमने इतना कर लिया to balance the heart and to balance the heart tapping on these 4 points, to balance the pericardium tapping on these 4 points. So we have done the tapping on these four points. Now
We will stimulate 1, 2, 3 more, 4 more points. CV17 and the CV12 we will do the guasa. हम CV17 पर और CV12 पर guasa कर सकते हैं. Guasa. Guasa will always give better results. So CV17 and the CV12 are very good point affecting heart and pericardium both. जो CV17 और CV12 दोनों के दोनों बिंदु. CV17 is the point found between the nipples के बीच में पाया जाता है CV17. And CV12 point found here. So this is the navel and this is the sternum bone. ये sternum bone है. इनके ठीक सेंट्रल में इस पॉइंट की लोकेशन एग्जैक्टली सेंटर. दिस पॉइंट इज लोकेटेड fortune down from the sternum और fortune up from the navel. चाहे तो नाभि से fortune ऊपर चले जाओ, चाहे sternum से fortune नीचे आ जाओ, you will reach on the CV12. The CV12 is very important point. CV12 is the very, very important point for the heart. And not only for the heart, it's a very good point for many problems. So we are stimulating CV12 and the CV17. These 2 points we are doing guasa. हम इन दोनों पॉइंट पे guasa कर देते हैं. अगर आपको guasa ना करना तो कोई बात नहीं, आप मैग्नेट लगा दो, आप निडल लगा दो. Now someone is asking me, oh, I don't want to do tapping. No problem. Put the magnet. आप GB22 पर मैग्नेट लगा दो, फिर यूवी सुजोग में UV1 पर लगा दो, फिर दूसरे हाथ में UV1 और GB22 पर लगा दो. You can do the treatment as per your own comfort. Just stimulate the point in the sequence. आप सुजोग में भी इलाज कर सकते हो, लेकिन पॉइंट को सीक्वेंस में स्टिमुलेशन करना है. Yeah, yes, is definitely you can do this. GB22, UV1, triple bomb 16, SI7. Yeah, but first we should complete the divergent flow like the GB22, UV1, GB22. Then putting the SI7, lung 9 will be better. Yeah, that can do. Yeah, you can definitely can do that. So let's see here. Now, do not forget SI7. SI7 को हम कैसे भूल सकते हैं? SI7 is the Leo connecting point of the small intestine, because we know this is the heart. The couple of the heart is pericardium. Sorry, the couple of the heart is small intestine, and this is the pericardium. The couple of pericardium is triple Barmer. So take the Leo connecting point of SI and take the Leo connecting point of triple Barmer. दोनों के Leo connecting point ले लो. SI7 as well as the triple Barmer 5, and do the plum blossom on the SI7 and the plum blossom on the triple Barmer 5. दोनों पे plum blossom करिए. So SI7 पर plum blossom करें. So look at the location of SI7 from the wrist. If we go 5 चुन अप, अगर कलाई से हम 5 चुन ऊपर जाते हैं तो हमें SI7 मिलता है. क्या आप बता सकते हैं? हमने SI7 के बारे में पहले कुछ बताया था. As per the master tongue, SI7 is very good point for which condition? Liver. As per the master tongue. In the small intestine meridian, we can treat upper body, middle body, lower body. We can treat heart, liver, intestine. So as per the master tongue, this is the heart gate, liver gate, intestine gate. All the 3 points in the small intestine meridian. ये तीनों के तीनों पॉइंट स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन में. अगर आप यहाँ पर निडल लगाते हो तो इस इंटेस्टाइन गेट, दिस द लिवर गेट
and this is the heart gate. So right now, this we are talking about the SI7. SI7 is the Leo connecting point of small intestine, but as per the master tongue, it's good for liver. So we have to put the SI7, which is 5 chun proximal, 5 chun proximal hota hai, 3 chun and 2 chun. So this is the location of SI7 on the border of this bone. So we can do the plum blossom here, plum blossom. And also on the triple bottom of 5, from the wrist, if we go 2 chun proximal, that is the location of triple bottom of 5. Agar kalai se, from the dorsal crease, if we are going 2 chun proximal, that is the location of triple bottom of 5. So वो हमारे triple bottom 5 की location. In that way, triple bottom 5 को क्यों किया हमने plum blossom? Anyone? Why we are doing the plum blossom on the triple bottom 5? Why? Because it is the Leo connecting point of pericardium. हमने SI7 पर क्यों किया plum blossom? क्योंकि ये Leo connecting point है हार्ट का. और हमने ट्रिपल बार्बर में क्यों किया प्लम ब्लॉसम? क्योंकि ये भी लियो कनेक्टिंग पॉइंट है हार्ट का. राइट, इन दैट वे this is the protocol as per the divergent channel concept. So there might be many other possibility, बहुत सारी और भी possibility हैं. आप सोचिए, logically सोचिए, और if you find some more point you can add. So this is the protocol, Phlegm misting the mind. Let's see what is the TCM concept. As per the concept of TCM, expel the kapha or the phlegm. How to expel the kapha and phlegm? Spleen 6, 9, sedate. हमने कल बताया था आपको कि जब भी हम आपसे पूछें कि हमें कफ को फेंकना है, आपको स्प्लीन 6, 9 को सेडेट करना होगा. तो आज वही बात आ गई. नाउ आई वांट टू एक्सपेल द कफा. शिवा, expel the kapha. Now expel the kapha with the stomach 40. Stomach 40 is the stop phlegm point. Stomach 40 हमारा phlegm को निकालने वाला बिंदु है. And regarding the pericardium 5, if you look at the pericardium 5, this point is 3 chun proximal from the wrist, pericardium 5. Pericardium 5 will clear the kapha from the heart as well as from the brain. ये हमारे हार्ट और ब्रेन में से कफ को क्लियर करेगा pericardium 5. So pericardium 5 is the very good point for this purpose. So we are using 4 points just to expel the kapha. हमने 4 बिंदुओं को सिर्फ कफ को निकालने के लिए प्रयोग किया. Spleen 6, spleen 9, stomach 40 and the pericardium 5. Sedate all. Purpose to expel kapha. हमारा पर्पज क्या है? कफ को फेंकना. Now the next purpose, there should not be formation of the kapha. Now how to stop the formation of the kapha? So UB20 and the CV12 tonification. अब urinary bladder 20 और CV12 को tonify करना है. So the question comes, why the UB20? हमने UB20 का प्रयोग क्यों किया? बताइए.
Why the UB20? अगर हमें कफ का निर्माण रोकना है तो हमेशा 2 पॉइंट याद रखिए, UB20 and CB12. Why the UB20? Because UB20 is the backstop point of spleen, and when there is a spleen is weak, formation of the kapha is there. तो हम UB20 पर ग्वासा कर सकते हैं, कपिंग कर सकते हैं और निडलिंग भी कर सकते हैं. We can do the needling, guasa, cupping, seed therapy, magnet therapy on the UB20. तो जब हम UB20 और CB12 को टोनिफाई करते हैं तो कफ का निर्माण रुक जाता है, फिर और कफ नहीं बनता. So now we have used 6 point only for phlegm, kapha, kapha, kapha. Phlegm, phlegm, phlegm. तो हमने UB20 और CB12 को टोनिफाई कर दिया. Now the most important, we are doing prickling on all the Jingwell point, especially हम जितने भी हमारे फिंगर टिप्स पर Jingwell point होते हैं सभी की prickling करते हैं. We are doing prickling on all the Jingwell point because Jingwell point are bringing alertness. Jingwell point are bringing consciousness. ये alertness लाते हैं, consciousness लाते हैं. Like I told you, in the mental retarded kids, we can bring more consciousness. So we will do the prickling on the Jingwell point. And a special Jingwell point will be heart 9 and the governing vessel 26. Governing vessel 26 is the Jingwell point of governing vessel. हम सारे Jingwell point की prickling करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से हम करेंगे ये 2 बिंदुओं की. Now, when we are doing the prickling, so there are 2 methods for doing the prickling. The method number 1, okay, कल मैंने आपको बताया था, आप एक वीडियो YouTube में वीडियो है, मैं आपको दे देता हूँ. I will put in the group. In that video, we have demonstrated that how to do the prickling. Because जब हमने PNST का प्रोग्राम किया था तो हमने 3-4 क्लासेस फ्री कंडक्ट की थी, उसमें हमने प्रिकलिंग सिखाया था, हाउ टू डू द प्रिकलिंग. सो आई विल गिव यू दैट वीडियो. ओके, सो दैट इज द प्रिकलिंग. चलिए मैं अभी क्लास के बाद ग्रुप में भेजता हूं. देयर आर 3 वीडियोस, यू कैन सी दैट. So that method of prickling. So we will prickle all the point on the fingertip like lung 11, LI1, pericardium 9, or here, triple bottom 1, heart 9, and SI1 in that way. The second method is very simple method of the prickling. Forget the point. Just do the prickling on the fingertips. They are also the fingertips and the tip of the toes. तो एक तो पॉइंट का पहला जो मेरिडियन के पहले पॉइंट को ढूंढ के प्रिकलिंग करो, एक तो मेथड ये है, और दूसरा सिर्फ फिंगर टिप पर प्रिकलिंग कर दो, वो भी इफेक्टिव है. दैट आल्सो इफेक्टिव. एंड द स्पेशल पॉइंट आर गवर्निंग वेसल 26 and the heart 9. These 2 points are special point. ये 2 बिंदु ज्यादा स्पेशल हैं क्योंकि ये कॉन्शियसनेस को लाते हैं. यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है हम ये दबाते हैं. This is a Jingwell point of the governing vessel. We are pressing this point when the person is becoming unconscious, and we are pressing this point also to bring the person in the consciousness. और कभी आपके सामने कोई पेशेंट बेहोश होकर गिर जाए
उस समय सारे जिंगवेल पॉइंट दबा देना. When the person is becoming unconscious, press all the Jingwell point. And the finally, so if you remember, 6 point we have used just for expelling the kapha. हमने 6 point सिर्फ कफ को के लिए यूज किया. नंबर 1 spleen 6 9, number 1, number 2. Then stomach 40, pericardium 5 to expel the kapha. फिर हमने 2 point का यूज किया ताकि कफ ना बने. 2 point to prevent the kapha formation, UB20, CB12. Now all the Jingwell point. The finally we will use 2 more point for the heart, the front view point of the heart and the back view point of the heart. That's it. Protocol is complete. The front view point of the heart is CB14 and the back view point of the heart UB15. That's it. Done. Let's see this. Itna kiya to protocol complete. Just do this. Protocol is completed. So finally we are taking the front midpoint and the back point of the heart. So protocol is like this: spleen 6, spleen 9, stomach 40, spleen 6, spleen 9, stomach 40, pericardium 5, UB20, CB12, heart 9, governing vessel 26, and with other Jingwell point CB14 and urinary bladder 50. So this is the protocol for flame misting the mind. ये प्रोटोकॉल है जब फ्लेम के द्वारा मन को भ्रमित कर दिया जाता है. So this is the protocol for the mental retarded kids. ये प्रोटोकॉल है जब बच्चे mental retarded हो जाते हैं. This is the protocol for the patient after brain stroke or the post paralytic. ये प्रोटोकॉल है जब व्यक्ति को पैरालिसिस या ब्रेन स्ट्रोक होता है उसके बाद. Only 2 points we tonify, UB20 and CB12. We do tonification. All the other point we do sedation. केवल हम 2 पॉइंट को टॉनिफाई करते हैं, बाकी सारे पॉइंट को हम सेडेट करते हैं. सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोटोकॉल. डन, ओवर. सो इनफ फॉर टुडे. तो आज की क्लास को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं. अब हम मिलेंगे कल. थैंक यू सो मच. क्लोजिंग द सेशन नाउ.